क्लास 9 है, जिसका फर्स्ट फिजिक्स का जो चैप्टर है दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैटर? मैटर मतलब कि आप जो फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं उसको टच करिए, वो एक सॉलिड मैटर है, ठीक है। अब मैटर, अपने आसपास कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व कर लीजिए, सब मैटर से बना है, एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ मैटर। तो उसके बाद इसमें ये आता है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में, अब फिजिकल केमिकल दो हिसाब से मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में देखेंगे अपन, और केमिकल में कि केमिकल नेचर क्या है मैटर का, और अलग अलग जो भी उसका स्टेट है उसका। तो इसमें पूरा डिटेल से हम नहीं जा रहे, तो कैसे इसमें आप एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हैं कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी चीज़ बनी है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है, ठीक है। अगर आप लड्डू बनाते हैं तो उसमें जैसे बूंदी का लड्डू है तो उसमें छोटी छोटी बूंदी होती है, तो बूंदी इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दैट थिंग यू मेड। सो इसी तरह जो नॉर्मली अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर, और वो आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे कि एटम क्या है। एटम यू कैन नॉट इमेजिन, you can only imagine, you cannot see. Smallest part of any matter is called atom. Matter is made of particles, sure it is. And how small are these particles of matters depends. We can like go go down to the atom itself. Now the next is characteristic of particle of matter. What are the characteristic of particle of matters? Particle of matter have space between them. Yes, definitely we have space. So in next activities you will learn how is there space and everything. Particle of matter are continuously moving. This also can be described by activities. Particle of matter attract each other. You can say it the law of gravitation. I don't know for sure, but somehow there's example, some ladies are hanging by each other. Next is states of matter. States, we have mainly three states: solid state, liquid state and gases. So how are these three states uh, different from each other? They are different by the orientation of atoms in them, and also the distance between them, energy, everything. तो सॉलिड स्टेट का क्या है कि इसमें जो आगे दे रखा है, ये जो फोटो है फिगर 1.5, ABC shows magnified seismic picture of the three state of matter. The motion of particle can be seen and compared in three state of matter. जो भी सॉलिड स्टेट है इसमें जो पार्टिकल्स हैं दे आर इन अरेंज्ड फॉर्म, एंड स्पेस बिटवीन देम इज ऑलवेज is constant and not changing. Liquid state में the particle are moving and there is no fixed position for a particular particle. Also in gaseous state the randomness is more and particle distance between particle is more. In that confined area the minimum amount of particles are there. So the gaseous state, you can like read by yourself and you will get an idea how is the solid state, gas state. And now the effect of change of effect क्या है, matter can matter change its state? Yes, definitely it can, it is change state. For example, take the water, ice, water and vapor, vapors. So and by the action of temperature, pressure and
by the action of temperature and pressure, the state can be changed. In beaker you can see the burner is. So the melting point, what is the melting point, boiling point? Melting point of solid is an indication of the strength of force of attraction between. Melting point definitely basically is जब हम बर्फ़ है और 0 डिग्री पे है तो उसको हम हीट देंगे तो पानी बन जाएगा 0 डिग्री पे। तो जो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होल्ड करके रखे होते हैं उनकी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हमें हीट देनी पड़ी, एनर्जी देनी पड़ी, दैट इज़ द वो उस और कम किया उस फोर्स को। दैट इज़ वाई टेम्परेचर इज सेम, टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। और वैसे ही उसमें उसको लेटेंट हीट बोलते हैं, शायद आगे आप पढ़ेंगे। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? टू ब्रेक द बॉन्ड्स, टू ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। Solid state, liquid state and gas state, all three are reversible in each other, can be achieved by heating and cooling. अच्छा, there are two units for temperature here, you can see degree Celsius and Kelvin. 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, तो उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, also effect of change of temperature we already seen. प्रेशर का भी हम देख सकते हैं कि जो पिस्टन है उसमें अप्लाई करने पे जो बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर टुगेदर, और ब्रॉट क्लोजर टुगेदर लाएंगे तो इसमें एग्जांपल दिया है, हैव यू हर्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इट स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर। क्या है कि जो CO2 है उसको प्रेशराइज करके हम उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं by only pressure. So yes, effect of change, yes, pressure can change the state of a matter. This also knows dry ice, CO2 जो solid है उसको dry ice भी बोलते हैं। Thus we can say the pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gaseous. Temperature and pressure have their roles to define the state of a particular matter. Now next term is evaporation. What is evaporation? So अगर पानी बॉईल हो रहा है 100 डिग्री पे तो वो वेपर बन रहा है, बट इन द एवरीडे लाइफ वी सी द temperature of ocean is not 100 degree, but still a lot of water get evaporated every day and we get the rain. So how does that happen? That is because of evaporation. A term evapotranspiration is also coined in civil engineering hydrology course, but that you don't have to worry about. We know that particle of matter are always moving and never at rest. Evaporation है ये. This phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. इसके बारे में थोड़ा आपको अच्छे से बताया जाएगा जब we will discuss it later. How does evaporation causes cooling? कूलिंग तो क्या है कि evaporate अगर पानी होके हवा में जाएगा तो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि पानी ऑलरेडी 100 डिग्री पे नहीं है और वो वेपर है तो उससे सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा। Now why should we wear cotton clothes in summer? Why does we water droplet on outer plate of glass of containing ice cold water? These are very basic question. पानी की बोतल फ्रिज से निकाल के आप बाहर रखोगे तो उसके बाहर पानी आ जाता है। What is the reason of it? You have to find out by yourself. These are very basic questions. There are also two additional stages, plasma and Bose-Einstein condensate. तो प्लाज्मा क्या है कि दिस इज कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। जैसे कि आपकी ट्यूबलाइट है उसमें कुछ गैसेस भर दी जाती है और जब हम स्विच ऑन करते हैं तो जो गैस है वो आयनाइज्ड हो जाती है और वो ग्लो करती है। नियॉन लाइट्स वगैरह में भी ऐसा ही होता है। तो दैट आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ दैट गैस इज कॉल्ड प्लाज्मा। super energetic super excited particles,
और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है कि इन्होंने दोनों ने मिल के, आइंस्टीन और बोस ने 1920 में दिया था, थ्योरी दिया था, जिसको कि 2001 में प्रूव किया गया। इसमें क्या है कि बहुत ही लो डेंसिटी गैस को बहुत ही कम टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो वो जिस स्टेट में रहता है उसको, दैट a stage can be achieved and that state is called Bose-Einstein condensate. That is it. I think you got an overview about this chapter. After this is only 11-minute video and you will get an overview. After that we will make a better video of this chapter. Thank you all. My name is Pawan Kumar Kileri and you can subscribe my YouTube channel.